So the slides I will just repeat. We saw the shift required in a curve, and as I mentioned, this shift is going to be a big issue the moment we plan to increase the speed potential of the curve. So someone asked if we have different length of transition. Normally, when we are designing any curve, we should provide same length of transition. But कई बार situation ऐसी आ जाएगी, in your field you will find that you have different length of transition, and because of this different length of transition, now normally if you are laying any curve, so these two are my common tangent points. I initially lay my circular portion of the curve. So whenever I plan alignment of any curve, these two are the locations between which I decide to provide a curve of radius r. This is my deflection angle delta. These two are common tangents, and this length, if this is delta, this is radius, this is r n delta by 2. This is also equal to r n delta by 2. If I convert this into a circle, now when I am going to plan my laying of transition, my transition is going to start from somewhere here. Suppose I plan to provide a transition of equal length at both ends. So this is how I plan to provide my transition. This is also equal, this is L1, this is also equal to L1. And if I make my Versine diagram, before making this Versine diagram, let me make the Versine diagram of circular curve. So if this red one is my original circular curve, and I try to make the Versine diagram of this circular curve. So this Versine diagram, as we understand, will be something like this. एक rectangle के form में होगा, and the Versine in this portion will be c square by 8r. R is the radius, c is the chord. Chord in our case is 20 meters, so this Versine becomes c square by 8r. When I provide a transition, my Versine diagram changes. Now if I provide a transition like this, this is my transition, this is my circular portion of the curve. These two lengths of transition are same, so this just a minute, hang kar gaya. Okay, this is L1, this is L2. So when I provide a transition, my transition is between this portion. मैंने दोनों साइड अभी equal transition provide किया. My Versine diagram changes like this. So this becomes my new Versine diagram. Transition length L by 2 on both sides of center line, L by 2 on both sides of center line. Versine in the central portion of the curve remains same as c square by 8r, as radius is same and c is same. So this is how my Versine diagram is going to be for a same curve with transition. Now when I provide same transition, I don't have any issue, because this shift at every location is going to be L square by 24 r. R is same, L is L1, दोनों साइड मैंने L1 माना, so there is no issue. R भी मैंने R1 माना हुआ है, there is no issue. So ये इस तरह के कर्व को ले करने में we don't have any problem, and this is how we are supposed to lay our curve also. But practically what you will find many times, you have unequal transition at both ends. So what happens when we have unequal transition at both ends? Now suppose this was my transition for a length, this was my curve for a length of transition of L1. Now suppose in this same case, I make another curve of same radius with a length of transition change to L2. अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, this becomes my L2. Similarly, I make a same length of transition. यहाँ पर मैंने, sorry, this is L2. ये पहले वाला L1 था, ये L1 था, this is L2. Now my curve becomes something like this. ये मेरी कर्व हो जा रही है, and if I make the Versine diagram of this curve, या इसी पे अगर मैं बनाऊँ Versine diagram, Versine diagram is going to be this way. This is how my Versine diagram is going to be. मैंने length of transition दोनों साइड बढ़ा दिया है. But as you can see, a shift in this case is going to be more
ये कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया है. दिस इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई 24R. So as L2 has increased, this point end of transition has shifted by larger value as compared to the earlier case जिसमें कि this shift was only up to this location. So when we are taking the same center line, इसी center line के about L2 लिया है, so this point has come to this location and this point अगर एक side मैंने L1 कर दिया, एक side मैंने L2 कर दिया, so we have to connect this 1 point and 2 point. These are the new points which are required to be connected. So this connection if we are going to provide, it has to be provided something like this. अगर मैंने इसी center line के about दोनों transition को डाला है, so मैंने एक transition इधर डाला, length L2, L2 is more than L1, so naturally shift at 2 is going to be greater than shift at 1, and because of this if I continue this, एक कर्व हमारी यहाँ जा रही है सेम L1 वाली और दूसरी L2 वाली हमारी कर्व यहाँ जा रही है, you can see this second line, so certainly they can't be connected. ये दोनों आपस में सेम किसी एक रेडियस R पे नहीं कनेक्ट हो सकते हैं. So we will have to continuously change our radius when we are joining from this point to this point, क्योंकि दोनों की शिफ्ट अलग आ रही है. इसको प्रॉब्लम को थोड़ा और अप्रिशिएट करने के लिए आप इसको मैं एक नक्शा और बनाता हूँ. Now when I give a length of transition L1, इस साइड भी मैं length of transition L1 देता हूँ. You remember the laying of curve, आपको ये समझ में आएगा कि this is equal to delta. अगर मैं सेंटर लाइन की तरफ लेके जाऊँ, so from here we have a circular curve, and ultimately what is happening, यहाँ से ये parabolic है, this length is parabolic, this length is parabolic, in between we have a constant radius R, and this radius is basically plotted like this. If you draw a tangent here and a tangent at these 2 points, these two end of parabolic curve, ये अगर यहाँ पर आप tangent बनाते हैं, इन दोनों के बीच में आपने radius R लेकर दिया है. This is how basically you are connecting these two ends. So this end is parabolic, this end is parabolic, and the central portion, this is circular, ये आपका circular है, and these two are the tangents. This T length is equal to this T length. दोनों, क्योंकि दोनों साइड length of transition same है, आपका ये दोनों T बराबर है. Now in my situation, what has happened? अगर मैं इसी को अलग-अलग transition length के लिए बनाऊं, so my situation has become, this was my common circular curve. मैंने एक transition यहाँ बनाया, फिर मैंने लेंथ L2 के लिए बनाया, लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया. Earlier this was my common tangent. Now what happens when I have a curve, जब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी L2 है और इस साइड मेरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन L1 है. Both side I have different length of transition. So let us see where my tangent line goes. Now this tangent line instead of this point is now going to be the new tangent line. इसकी tangent line यहाँ जा रही है और इसकी tangent line कुछ ऐसे आएगी. So now we have to plot a curve between these two tangent lines. मेरी पूरी tangent line मेरी change हो जाती है. अगर पूरी tangent line change हो जाती है, इसका मतलब what it means is, now if I want to provide any circular curve, अगर ये length यहाँ पर T है और ये total T1 है, ये total length T2 है, so T1 is not going to be equal to, in this case in my figure T1 is less than T2. So if I want to provide any circular curve, मैं circular curve इन दोनों के बीच में ही एक radius का provide कर सकता हूँ. Because T1 ये T1 हो जाएगा and this length will be T2 minus T1. इतना आपको straight रखना पड़ेगा, which is not possible. This is not what we intend in our circular curve. So हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, if you see your versine, जब भी आप इस टाइप की सिचुएशन में जाते हो, your versine will never be uniform. आप यहाँ से यहाँ तक पुश करके इसको ज्वाइन कर लेते हो. रेडियस कॉन्टिन्यूसली यहाँ से यहाँ के बीच में आपका चेंज होता रहेगा. योर versine will continuously be changing
and if I try to make this versine diagram, ये किस टाइप का versine बनेगा, you can appreciate this versine diagram. अगर मैं इसी का versine diagram बनाना चाहूँ, so your versine will be, this is your one end, this is your another end. So between this point and one length of transition, your versine will be like this. In this portion, your versine, ये यहाँ तक आ रहा है, your versine will be like this. Normally, if L2 is more than this one, if this is V1, this is going to be V2, and in between you have to modify your versine. आपको versine diagram में ये versine इन दोनों के बीच में modify करना पड़ेगा continuously. Why this kind of diagram? ये इस टाइप का diagram क्यों आ रहा है? To understand this, let me just okay. To understand this, यहाँ पर हमने क्या किया, एक और, ये क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ? Are you able to understand जो मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है? Yes, sir. I got it. But we can make in another way, sir. That is center line, midsection of the curve. There will be a difference in S1 minus S2 shift. And we can put a common transition there, sir. Okay. See, I have understood what you are saying. चलो मैं वो बताता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो. Let me try to. Now, if you have understood this, let me just make another diagram. Now, what are the different solutions? इसके solutions क्या क्या हैं? कैसे निकालना है? आप common, अगर आप common बनाना चाहते हो, means you are basically trying to convert it into a two circular curve. ये करना चाह रहे हो उसको two separate circular curve instead of having a uniform circle from one side to another. Uniform circle आप वैसे भी नहीं बना पाओगे. You will have to either change the versine or you will have to make a compound kind of thing. Now let me just make another diagram. Since we want to merge these two curves, this is L2 and this is L1. This shift is going to be L1 square by 24R. This shift is going to be L2 square by 24R. Now this shift is more. So this circle, if I continue, it is not going to combine. This circle, if I continue, it is not going to merge with these two. ये situation आ रही है. But we have to merge these two lines because ultimately we want them to be connected. Solution can be, now if I want L1 square by 24R1 to be equal to L2 square by 24R2, अगर मैं इसके बराबर चाहता हूँ. Now, as L2 is more than L1, that means R2 is going to be less than R1. यही मतलब निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरी रेडियस अलग अलग आएगी. सो R2 द रेडियस, क्योंकि ये एक रेडियस में तो कनेक्ट नहीं होगा. यहाँ की जो रेडियस है, दिस R2 एंड इफ दिस इज R1 which is equal to same radius, ये R1 मैं लेके चलता हूँ. So R2 at this location is going to be lesser than your R1 at this point. R2 is going to be lesser than this one, means ये जो ट्रांजिशन मैं बना रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्कुलर कर्व जो होगा, इट विल बी समवेयर हियर. जब R2 में लेस करता हूँ, so इसका इक्विवेलेंट सर्कुलर कर्व कहीं यहाँ आएगा. This will be your R2 and this will be your R1. So we will have, for this transition, the equivalent circular curve will be at some other location. For this transition, equivalent circular curve will be at different location because we are taking two separate radius. दोनों साइड में कहता हूँ रेडियस अलग अलग होगा. Now to find कि ये मर्ज कैसे करेगा, what I want is I want to merge it somewhere. अब ये दोनों को कहीं मर्ज होना है. So for merging we can assume that मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन लेता हूँ and this distance for both the curves are same. ये पॉइंट दोनों कर्व के लिए सेम आ जाए, यहाँ पर ये मर्ज कर जाए. मर्ज कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस वैल्यू. अगर मैं इस वैल्यू को निकालूं इन एनी कर्व, अगर ये कर्व मैं लेता हूं, Sir, in this case, R2 should be greater than sir R1. You have written R2 less than R1. जस्ट अ मिनट. कहाँ चला गया?
L1 is less than L2, R1 is also going to be less than R2, right? ये कर्व यहाँ की बजाय ये उल्टा चलाएगा. So instead of that, let me make change R1 and R2. मैं इसको let this be R1 now in the so this be R1 and this be R2. ये नीचे वाले को मैं R2 मान लेता हूँ. ठीक है. This is the situation. वर्साइन डायग्राम उल्टा हो जाएगा. जो मैंने बनाया था उसका उल्टा हो जाएगा वर्साइन डायग्राम. Now what happens when you have this kind of situation? अगर आपकी इस टाइप की सिचुएशन आती है, so you want this, कहीं पर इसको आप मर्ज कराओगे, ये इन दोनों लोकेशन को यहाँ पर मर्ज कराओगे, and for getting that value, what we can imagine, एक जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ. You can just appreciate this. अगर मैंने यहाँ पर बनाया, अगर ये मेरा इक्विवेलेंट सर्कुलर कर्व है, this is radius r, this is radius r, this angle is delta, this angle becomes delta by 2. ये ज्योमेट्री से आप देख सकते हो, this becomes delta by 2. Now what I want is, I want this value, ये लोकेशन, this shift is equal to L square by 24r, ठीक है ना. This is radius r. So if I take this length, यहाँ इस क्राउन से लेकर के ये सेंटर तक की ये टोटल लेंथ जो आती है, R into secant delta by 2. so this is going to be r by cos delta by 2, and this is total distance minus r. Minus r is this distance, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस में निकालूं. So this value is equivalent to this distance, and total position of this location is going to be r by cos delta by 2 minus r plus L square by 24r. That is the general formula. Final curve after providing your transition at crown is going to be at this location. Now at crown, if I want these two curves to be at the same location, एक का radius r1 है, length l1 है, और so in that case what I am going to do is, I am going to let first one is r1, so this becomes delta common है, r1 cos delta by 2 minus r1 plus l1 square by 24 r1 is going to be l2 square, sorry, l2 square by 24 r2 plus r2 by cos delta by 2 minus r2. Right? So corresponding to 1 r1, corresponding to 1 l1, knowing the value of delta, delta मुझे मालूम है क्या है, knowing the value of l2 also, I can find the r2 value at other end. तो दूसरे साइड का रेडियस मेरा क्या होने वाला है, कोई एक इमेजिन कर सकते हैं, r1 r2 के बीच में हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है ना. सो इफ आई नो r1 कि मेरा इक्विवेलेंट सर्कुलर कर्व क्या था, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r2. दूसरे साइड का कनेक्टिंग कर्व मैं रेडियस में निकाल सकता हूँ. नाउ एज you understood, now in that case, if L1 is more than L2, R1 is also going to be more than R2. So if I make the Versine diagram in that case, अगर मैं Versine diagram बनाता हूँ, my Versine is C square by 8. So if R1 is more than R2, my V1 is going to be less than V2. So my Versine diagram is going to be something like this. R1 अगर मैं R1 is more, so Versine is going to be less. R2 is less, so my Versine is going to be high. So this is how my Versine diagram is going to be. This is going to be V1, this is going to be V2, and in between I have to change my Versine. So I can find the Versine value at the other end, so that I can connect these kind of situations. One is L1 and another is L2. But as you can see, this kind of situation, normally when you are designing any curve, you are not providing this kind of situation. आप इस टाइप का कभी भी situation provide करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी Versine change होगी ही. Either you go for a compound curve, central position से यहाँ तक आप R1 लेके जाओ, and then you go for changing R2. But the moment you are changing R2, in that case you will have a R1 R2, you will have a common change which you are converting into a compound curve. तो चाहे तो आप इस कैलकुलेशन से R1 R2 निकालो और एक कंपाउंड कर्व टाइप बनाओ, यहाँ पर इस टाइप का Versine डायग्राम बनाओ, or you continuously change the Versine. So for smooth running, you are going to change the Versine continuously. So this kind of
situation is going to arise in your case. So it is never suggested to have different transition length. But in field you will find it is not the initial aim, but after machine tamping, many rounds of machine tamping, you find that your curve has come to a situation where your length of transition at both ends has completely changed. और जब आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो and if you try to achieve a single or equal length of transition at both ends as per your original design layout, you will find that your slews are going to be very high. So maintenance में normally आपको दोनों side में to reduce your slews, you are I think I will say you are compulsorily bound to provide two different transition length in most of the cases. एक side अगर आप 100 मीटर ले लो, दूसरा side मुझे लगता है 120 मीटर आपको देना पड़ रहा होगा. But in that case, you are never going to have a constant versine at both ends. The constant versine all along the circular curve. आपको versine change करता हुआ दिखेगा. You go for any ROC और किसी भी ROC फॉर्मूला में चले जाओ, फिर आपने दोनों साइड length of transition change किया है, then the final result you will find your versine is varying. अगर नहीं vary कर रहा है, इसका मतलब लास्ट में कहीं merge नहीं करेगा, क्योंकि merge तभी करेगा जबकि versine आपका change करेगा दोनों. ठीक है ना? So ideally we should always plan to have same transition length at both ends. Yes? Yes, sir. Okay. Because this is not a very good situation. This situation में आप आ रहे हो, it's not a very good situation. Okay, now let me, before going to something else, we have developed one very good software at Edison. So before going to that, let us see some calculation for finding. We saw how to find the transition length, how to find the speed potential of a curve. So let us discuss few examples on how to find the speed potential, and let us also see how to calculate the shift in a curve when we are planning to go for increasing the speed potential of our existing curve. क्या होता है जब हम increase करने की कोशिश करते हैं? So we'll see one by one. These are different formulas which we discussed while discussing curves. We said degree is equal to 1750 by r. Super elevation is equal to GV square by 127 r. So if we have a curve, we have to find the super elevation. We know the radius. We know the velocity of the fastest train or goods train. This G is 1750. Then so these values are known to me. I can find the super elevation of the curve, and this formula can be simplified to 13.76 V square by r. V permissible, ये सारा एक ही formula से निकल रहा है, is equal to 0.27 square root of r into CA plus CD. And length of transition is maximum of this value, and this value, where this is based on RCA, rate of change of cant. What is rate of change of cant? Rate of change of cant means if I have a curve and if I make my super elevation diagram, this is how my super elevation diagram is going to be. This is my cant, and suppose I permit velocity v in this track. So rate of change of cant is, one is we are moving from this cant 0 to some value of cant. So RC of cant is going to be CA divided by time taken in traveling this distance. This is RCA, millimeter per second. कितना time मुझे लगता है, and time taken is going to be, this is L, so it is going to be L by V. This is your RCA. Similarly, this is based on your formula RCD, rate of change of cant deficiency. You are not normally able to provide the full cant, so there is the fastest train is moving at certain cant deficiency, and this RCD is equal to cant deficiency divided by length by V. These two values are limited as we discussed in our class. So they have been limited. Normally this should not be more than 35 millimeter per second. This should also be not normally more than 35 millimeter per second. But in exceptional cases, this can go up to 55 millimeter per second. This can also go up to 55 millimeter per second. This RCA and RCD. Similarly, cant gradient, normally in normal case, 1 in 720. In exceptional case, we say we can go up to 1 in 360. So on these three bases, the length of transition has been calculated, and converting these into your kilometer per hour and millimeter, taking this as 35 millimeter per second, 35 millimeter per second, 1 in 720. This value comes as 0.08 CA into VM, 0.08 CD into VM, and 0.02 CA. Minimum we can go taking this 55 millimeter per second, 55 millimeter per second, and 1 in 360. This value comes as 2/3 of this, 2/3 of this, and half of this. So
These are important formulas which are used when we are designing a curve. We do a lot of checks कि RCA मेरा exceed कर तो नहीं रहा, RCD exceed कर रहा है कि नहीं. And shift of the curve is going to be L square by 24R. This is shift of the curve in general. Circular portion से जो circular portion अंदर चला आता है. But this is when we have assumed that both the curves are ideal. जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो मैंने बिल्कुल सर्कुलर से सर्कुलर में ट्रांसफर किया है. बट इन एग्जिस्टिंग केस we can have a curve which is not exactly matching to the ideal profile, and we have versins or we have offset at different location. Then we have to find shift at different location when we increase the speed potential of the curve. So we'll see how these things are done. Okay, these are certain important limits. CA is equal to 165 millimeter maximum we can go. CD 100 millimeter in normal case, with the approval of PC, and 75 millimeter otherwise. CX is 75 millimeter. Minimum radius is of 10 degree curve R minimum, and RC and RCD, as I mentioned, normally 35 millimeter per second, but in exceptional cases we can go up to 55 millimeter per second. Can gradient normally 1 in 720. In exceptional cases we can go up to 360. Particularly class chal rahi hai. So based on this understanding, let us now see certain examples. Before seeing certain examples, how we design our curve, let us see the procedure. There are, normally if you see any curve, normally we know the speed of the maximum or the fastest train which is moving in my section. Similarly, I know the speed of my goods train. So normally 55, 65, in some section it is 75 km per hour. So I know V maximum, I know V goods, I know the radius of curve. जो हमारे कंस्ट्रक्शन ने जब बनाया था तो we decided certain radius, 2 degree का कर्व बनाया, 1 degree का कर्व बनाया. And there is another term which we call V equilibrium. V equilibrium is a speed somewhere in between V maximum and V good, for which normally depending on the kind of traffic moving in our section, we decide certain, we discuss that also, we decide certain speed for which we are going to provide the cant so that we can balance cant deficiency for my passenger train and cant excess for my goods train. So V equilibrium is that speed. So normally let us assume in the current situation हमें V equilibrium नहीं मालूम होता है आज के डेट पे, हमें PC से नहीं मिलता है, हेडक्वार्टर से नहीं मिलता है. So we know the V maximum, we know the V goods, we know the radius. So the procedure we are following is we will find the equilibrium cant for maximum speed. V maximum के लिए we will find the equilibrium cant. Find minimum cant required by deducting the cant deficiency from the equilibrium cant. That means suppose I find कि मुझे cant इतना चाहिए, मैक्सिमम कैंट में पैसेंजर ट्रेन को, फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन को इतना चाहिए, बट मिनिमम आई कैन प्रोवाइड इज दिस मच माइनस कैंट डिफिशिएंसी. मैं इतना कैंट प्रोवाइड कर देता हूँ तब भी माई फास्टेस्ट ट्रेन कैन मूव एट अ स्पीड, एट द मैक्सिमम स्पीड. सो दिस इज योर स्पीड विच कैन बी परमिटेड, मिनिमम कैन दैट कैन बी परमिटेड फॉर योर फास्टेस्ट ट्रेन. सिमिलरली फॉर गुड्स ट्रेन की भी एक स्पीड है. So goods train will require certain cant, and then you add cant access to that, and you say, okay, maximum cant we can provide for goods is some value. So this is your, say your goods की cant चाहिए, then you say I can provide a cant access, and for goods I can provide this much cant. So we have two limits. One is the maximum cant that can be provided for the goods, and the minimum cant that can be provided for the passenger train. ठीक है ना? So normally your cant shall be decided based on these two factors. इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे आप अपने कैंट को डिसाइड करते हो कि गुड्स की रिक्वायरमेंट कैंट की क्या है. वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व, वी आर करंटली नॉट टॉकिंग ऑफ ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ द कर्व. सो दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन आती है, एंड देयर कैन बी टू सिचुएशंस व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस केस. फर्स्ट इज, लेट मी टेक माय गुड्स ट्रेन. गुड्स, ये मेरी लेवल ट्रैक है. मैंने कहा गुड्स के लिए मेरी रिक्वायरमेंट कैंट की, कैंट रिक्वायर्ड फॉर गुड्स इज दिस मच. देन आई ऐड कैंट एक्सेस टू दिस एंड आई कम टू दिस पॉइंट. ठीक है ना, दिस इज माई कैंट एक्सेस. सो आई कैन प्रोवाइड कैंट अप टू दिस लोकेशन. मैं यहाँ से यहाँ तक गुड्स के लिए सोच सकता हूँ कि मैं कैंट प्रोवाइड कर सकता हूँ. सिमिलरली फॉर माई पैसेंजर ट्रेन, माई रिक्वायरमेंट इज दिस. दिस इज माई रिक्वायरमेंट ऑफ कैंट फॉर पैसेंजर ट्रेन, CARP, ये रेड लाइन जो दिख रहा है. एंड देन आई डिडक्ट कैंट डेफिशिएंसी फ्रॉम दिस, एंड ऐसे आई कैन प्रोवाइड माई कैंट अप टू दिस वैल्यू. मैं कैंट यहाँ तक प्रोवाइड कर सकता हूँ. So for carrying my fastest train, I can provide cant up to this value,
ये कैंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना. एंड फॉर गुड्स ट्रेन आई कैन प्रोवाइड कैंट अप टू दिस. सो आई हैव a margin of this much between which I can provide the cant. और ना मेरी गुड्स की स्पीड हैम्पर होगी, ना मेरी पैसेंजर की स्पीड हैम्पर होगी, अगर मैंने कैंट इन दोनों के बीच में प्रोवाइड किया है, इस लिमिट के बीच में. So neither my passenger train fastest train speed is going to be hampered and my goods condition of maximum cant access both are going to be met. So we have a margin to play in between. इन दोनों के बीच में प्ले करने का मार्जिन है. प्ले करने का मार्जिन मतलब ये हुआ कि I can control my effective cant efficiency and cant access. अगर मैं, you can just imagine if I am providing cant at this end, अगर मैं बिल्कुल इस गुड्स के हिसाब से एक्सट्रीम एंड पे प्रोवाइड करता हूँ, मीन्स आई एम रिड्यूसिंग माई कैंट एफिशिएंसी बट आई एम गिविंग मैक्सिमम कैंट एक्सेस. मैं पूरे एक्सट्रीम पे कैंट एक्सेस दे रहा हूँ. अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, इस लोकेशन के हिसाब से करता हूँ, तो आई एम गिविंग मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी एंड आई एम कंट्रोलिंग माई कैंट एक्सेस. सो if you provide somewhere in between, means you can control your cant access and cant efficiency. And this is an important observation. जब आप मेंटेनेंस करोगे तो कई बार आपको लगेगा कि यहाँ पर इनर रेल ज्यादा वियर हो रहा है सेक्शन में, या कहीं पर आउटर रेल ज्यादा वियर हो रहा है unnecessarily. So you can recalculate your cant, and if you find you have a margin in between, you can control your cant efficiency and cant access. तो अगर आपके स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो काइंडली चेंज द कैंट. ये नहीं कि किसी ने कभी कैलकुलेट कर लिया और आप उसी कैलकुलेशन पर हर बार जाके ट्रैक को लेके जा रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग कि योर ट्रैफिक कंडीशन हैज चेंज इन बिटवीन. अर्लियर ओनली पैसेंजर ट्रेन्स वर गोइंग, नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर गुड्स ट्रेन, और मे बी अर्लियर गुड्स ट्रेन वर गोइंग, नाउ ओनली पैसेंजर ट्रेन्स आर गोइंग. गुड्स तो उस रूट पे जा ही नहीं रही है. So you will have to play between this cant efficiency and cant access. We will see this software which helps us in playing between these two, cant efficiency and cant access. So this is one kind of situation where we have a margin to play in between. Second situation can be, now suppose this is the cant required for goods and I add cant access, I come to this location. This is the cant required for fastest train, I deduct cant efficiency and I come to this location. There is no overlapping in between. So in that case, I will have to reduce the speed of my passenger train so that मेरी यहाँ जो वैल्यू आ रही है मैं इससे ज़्यादा प्रोवाइड ही नहीं कर सकता हूँ, because that gives me the maximum cant access I can provide. So अगर मैं यहीं तक प्रोवाइड कर सकता हूँ तो I will add cant efficiency to this, and this cant is the final cant that I can provide, and for that I will have to calculate my speed potential. So speed potential of the curve, that means my maximum train speed is going to be restricted in that case, क्योंकि मैं एक लिमिट के बियॉन्ड कैंट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ. मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मिनिमम कैंट इतना प्रोवाइड करना था, यहाँ तक प्रोवाइड करना था टू परमिट माई मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन, बट आई कैनॉट प्रोवाइड मोर देन दिस. सो आई एम गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द speed of my fastest train. I am going to have a PSR in that section. So I don't have any margin to play. यहाँ पर प्ले करने का मेरे पास कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि certainly I want my fastest trains to move at the slowest speed. So मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम कैंट प्रोवाइड करूँगा with maximum cant access for goods, and then I will add cant efficiency and then find the speed potential of the fastest train. So I will add CD, then I will find the speed potential. So maximum cant में इतना ही प्रोवाइड कर पाऊँगा. So I am going to restrict the speed of the fastest train. So these two situations are going to come. We will see one example, few examples, और ये situation में कैसे play करना है that we will see. So procedure to find the speed on a curve. If you have an existing curve और आपको speed निकालना है, so cant to be provided shall be less than the maximum permissible speed, जो हमने calculation में देखा था. Corresponding to actual cant provided, find maximum speed, कितना speed आ रहा है. Find out the desired end. Once you have calculated your cant, you know the maximum speed you can permit. So for your length of transition required, the formula says you require cant V maximum, cant efficiency V maximum, and I is cant gradient. So you know the cant gradient you can permit. So you can find the length of transition required. Same thing that we discussed. Okay. So if I don't know my equilibrium speed जिसके लिए मुझे डिजाइन करना है, so if you see the normal calculation method, जो अगर आपने वो समझ लिया है तो नॉर्मली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. We normally calculate cant for goods required. इस goods के लिए हम देखते हैं क्या cant required है. Then we add cant access. We add cant access. We come to this point. ठीक है ना? And for this cant, this is the maximum physical cant that we can provide. For this cant, we find the speed potential that can be provided. So speed potential is cant you have provided
plus cant efficiency plus radius, sorry, multiplied by radius. Using this formula, you find what is the maximum speed you can permit. If this maximum speed, this VPRM is more than your maximum sectional speed, कुछ गलत लिखा गया इसमें. So if VPRM जो आ रहा है, if this is more than your maximum train speed, no SR is required. कोई speed restriction आपको लगाने की जरूरत नहीं. That means if suppose this comes as 130 kmph, ये 130 kmph आ रहा है, and your fastest train is moving at 120 kmph, so you need not impose any speed restriction on your fastest train. But if V permissible is less than V maximum, that means अगर ये V PRM आपका 110 आ जाता है and your fastest train is moving at 120 kmph, means you have to apply speed restriction of 110 kmph. ये थोड़ा गलत लिखा गया, ये this is to be discarded. So in that case you have to impose a speed restriction of 110 kmph, right? So this is what it intends to say. Okay? Now let us come to certain exercises. First is, we will see this, we will try to solve this. So find the maximum permissible speed for BG route having speed potential of 130 kmph, degree of curve is 2, speed of goods is this much, CD is 100, CX is 100. So we want to find the maximum permissible speed, BG route having speed potential. So हमें radius मालूम है, R is going to be 1750 divided by 2 is equal to 875 meter. This is my radius of the curve. Maximum permissible speed, V maximum, as we know, is going to be 0.27 square root of R into CA plus CD. So for this speed, what is the cant required? Cant required कितना आएगा? CA is equal to 13.76. V maximum is 130 square divided by 875. We will find this value. This value comes as, अगर मैं इसको करता हूँ तो 130 whole square into 13.76 divided by 875. So this comes as 226.45. ये हमारी इसके हिसाब से कैंट चाहिए, और हमारी कैंट इसके हिसाब से क्या चाहिए? This cant required for goods is 13.76, speed is 65, whole square divided by 875. This becomes equal to 13.76 into 65 whole square divided by 875. This comes as 66.44. ठीक है? So as I mentioned, what normally we do, हमें लगा कि गुड्स के लिए मुझे कैंट इतना चाहिए 66.44. So गुड्स वाले में मैं कैंट एक्सेस ऐड करूंगा. So what I will do, I will make it 66.44 plus 75. This is the maximum cant I can provide. So plus 75. This is coming as 141.44. So normally we are providing cant in a multiple of 5. तो मैं इसको 140 cant मान के चलता हूँ. And let me see the speed potential. This is the maximum cant I can provide. Let me see whether my speed, if I provide this cant, is going to be more than 130 kmph or not. Speed क्या होगी? 0.27 square root of R is 875. CA plus CD, cant is 140. CD I have taken as 100. So if I take this value comes as 240 into 875 square root of this into 0.27. So this value comes as 123.7. So what I find, because of goods, my speed maximum that we can go is only up to 123, whereas my speed potential of section is 130 kmph. So I have to apply a permanent speed restriction of 123.7. That means equal to 120 kmph के आसपास का मुझे एक permanent speed restriction पे डालना पड़ेगा. ठीक है ना? So this is first part. This is what I am going to get. So my super elevation required 140. As we can see, this is 140, and maximum speed I can permit is 120 kmph. So this is first part of the exercise. Second part is ट्रांजिशन लेंथ मुझे अब कितना प्रोवाइड करना है इसी कर्व के लिए. मैंने देखा कि मेरी स्पीड पोटेंशियल इतनी है 130, सेम डिग्री ऑफ कर्व, स्पीड ऑफ गुड्स इज दिस मच. हियर वी आर मेकिंग सर्टेन मिस्टेक. आई हैव टेकन दिस एग्जांपल बिकॉज थोड़ी बहुत हम लोग इसमें गलती करते हैं. गलती क्या करते हैं, लेट अस सी. नाउ व्हाट वी गॉट इज V maximum we have calculated as 120 kmph. ठीक है. सुपर एलिवेशन इज
140 millimeter. CD, CS, right? The formula that we used was L1 is equal to 0.008 CA into VM. इस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं CA into VM, can't we have provided 140, so 140 into 0.008 into velocity is 120 kmph. This is maximum we can permit. So into 120, and this is 120 into 140 into 120. So this value is coming as 134.4. So this is my length of transition that is required from my RCA consideration. इतना चाहिए अगर मुझे 35 मिलीमीटर पर सेकंड के अंदर रखना है, तो इतना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन मुझे चाहिए. कमिंग टू L2, L2 is equal to 0.008 into CD into VM. मिस्टेक इस वाले में होता है. मिस्टेक क्या होता है कि दिस CD वैल्यू is not 100. CD is not equal to 100 because this CD you have to calculate कि actually वो ट्रेन कितना CD एक्सपीरियंस करती है, कैन डेफिशिएंसी कितना है फास्टेस्ट ट्रेन के लिए, and that can deficiency is equal to your actual CD is going to be can required for 120 kmph. ये 120 kmph क्योंकि आपने बहुत कुछ राउंड ऑफ किया हुआ है, आपको एक्चुअल CD निकालना पड़ेगा. एक्चुअल CD कितनी आती है? मैक्सिमम स्पीड 120 परमिट कर सकते हो, तो 120 के लिए कैन रिक्वायर्ड इज 120 square by 875 and you are providing actual count of 140. So let us see what actual CD is coming. Can deficiency is basically 13.76 into 120 divided by 875 minus 140. So this value is coming as 86.45. So actual can deficiency is not your maximum limit, but actual can deficiency which the vehicle is encountering is 86.45, and therefore this L2 should be calculated for this 86.45. This is a common mistake. हम लोग ये गलतियाँ करते ही हैं इन जनरल. यहाँ किसी को जब ये एग्जाम्पल दिया जाता है, ये गलती वो करता ही है, उस CD को हर बार वो 100 ले लेता है. Your CD is the actual CD. ये आपको वो नहीं लेना है जो मैक्सिमम उसकी लिमिटिंग वैल्यू है. So this is second part. आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, and accordingly you have to calculate L2, and similarly L3, which is basically simple है. L3 is equal to 0.72 into your cant value. So taking these three values, your values are going to come as, इसके कारण ये L2 इतनी आती है, इसके कारण L1 इतनी आई, और इसके कारण L3 इतनी आ गई. So this is the desirable length. Now there are three requirements, L1, L2, L3. इसमें जो मैक्सिमम आता है आपकी ट्रांजिशन लेंथ उससे बड़ी होनी चाहिए. So in this case L1 is the biggest one, which is 134.4. Now since you are providing transition length in multiple of 10, so you are going to provide a transition, क्योंकि stations आपके 10 मीटर पे होते हैं, so you are going to provide a transition length of 140 in this case. ठीक है ना? This is your transition length that will be required. If I go for limiting situation means my RCA RCD is 55 millimeter per second and can gradient is 1 in 360. So in that case this will become, इसका 2/3 हो जाएगा, ये इसका भी 2/3 हो जाएगा, और ये half हो जाएगा, and this value comes as, so maximum 90 meter transition length you are going to provide. Minimum transition length of 90 meter you are going to provide. So this way you are going to calculate your transition length. So you are basically किसी की आवाज़ आ रही है. So if you are asking something, well and good. Otherwise कुछ पूछ रहा हो गया? Yes sir. हाँ बताओ. सर जो मैक्सिमम स्पीड सर हमने कैलकुलेट करी है, सर मैक्सिमम स्पीड पे तो हमारी कैन डेफिशिएंसी, सर मैक्सिमम स्पीड तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम CD को मैक्सिमम वैल्यू लेंगे. नहीं, आपने क्या किया है, CD को मैक्सिमम, मैं ही कह रहा हूँ सर जैसे 130 kmph के लिए आपने कैलकुलेट करा था सर, इक्विलिब्रियम कैंट रिक्वायर्ड वाज 226 mm. हाँ ठीक है, चलो पीछे वाला जी सर ठीक है. ये आपने कहा कि मेरी, हाँ ये सर ये 130 kmph के लिए अलाउड था सर. अगर मैं इसमें से कैंट एफिशिएंसी 100 यानी कंप्लीट कैंट एफिशिएंसी दे देता हूँ 100 mm, माइनस कर दो.
जिसका मतलब है सर 126 mm का अगर मैं कैंट दे देता हूँ एक्चुअल कैंट, तो मैं 130 की स्पीड परमिट कर सकता हूँ। परफेक्ट कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम क्या सर है? आपने सुनो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? गुड्स के लिए कैंट एक्सेस ज्यादा हो जाएगा ना, गुड्स के लिए कैंट एक्सेस कितना हो जाएगा? देख लीजिए सर 75 से कम होगा सर, आपने गुड्स के लिए 66 कैलकुलेट करा। हाँ निकालो ना, मैं निकालता हूँ, नहीं हो सकता ना गुड्स के लिए कैंट। जस्ट अ मिनट, कॉल आ सर, नमस्कार सर, मैं क्लास में कर सकता हूँ, क्लास के बाद हूँ 1:15 बजे तक चलेगा सर। राइट, ठीक है। अब देखो तुम्हारी ये तुमने कैन प्रोवाइड कर दिया 126.45, ठीक है ना? दिस इज द कैन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। कैन रिक्वायर्ड फॉर गुड्स इज 66.44, राइट? एक मिनट को, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। ये तुमने 66.44 निकाला था, हमने कैन प्रोवाइड किया फिजिकली 141.44, और सर क्योंकि ये 141 है सर, यानी मैक्सिमम मैं 141 भी अगर कैंडी दे सकता हूँ, नहीं तो सर उसके लिए तो मैं यानी फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए 141 प्लस 100 करूंगा, 241 आ जाएगा सर। 241 के कंपेयर के रिलेशन में जो मेरी मैक्सिमम स्पीड आएगी वो मेरी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए सर। नहीं 141.44 आ रहा है, इसमें तुम 100 ऐड करोगे, यही तो किया हमने, जो स्पीड तुम्हारी 120 आ रही है, तुम मैक्सिमम कैन फिजिकली 141.44 प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? एग्री? यस सर, इसमें कुछ नहीं, यस सर। तुम इसकी स्पीड पोटेंशियल निकालोगे तो 140 प्लस 100 कितने के लिए निकालोगे? एग्री? ठीक है ना? यस सर, यही तो 123.7 आ रहा है। वैसे सर पर रिवर्स कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, आपने 130 के लिए इक्विलिब्रियम रिवर्स कैलकुलेशन में क्या गलत हो रहा है बताता हूँ। रिवर्स कैलकुलेशन में कि तुम्हारी कैन रिक्वायरमेंट आ रही है फास्टेस्ट ट्रेन के लिए 1226.45, ठीक है? अब तुम कह सकते हो प्रोवाइड अ फिजिकल कैंट ऑफ 126.45 माइनस दिस। एक मिनट, इसमें क्या गलत आ रहा है? कुछ गलत आ रहा है, कुछ कैच है, कहीं मिस हो रहा है कुछ। स्क्वायर बाय आर माइनस 126.45, क्या गलत हो रहा है इसमें? जस्ट अ मिनट, कुछ कैच मिस हो रहा है यहाँ पर। कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रहा है? एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है मुझे लगता है। कहाँ थे हम लोग? 130 के लिए सर या तो 226 वैल्यू गलत होगी सर। नहीं, मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, ये हो नहीं सकता, ये दोनों नहीं हो सकता है। लेट मी जस्ट सी, तो दोबारा मुझे कैलकुलेट करना था, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है इसका मतलब। एक मिनट को, मे बी विल सी, वी विल दोबारा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? दिस कैन रिक्वायर्ड फॉर फास्टेस्ट ट्रेन इज 13.76 b स्क्वायर बाई 875। ये कितनी आ रही है? 130 इंटू 130 इंटू 13.76 divided by 875. This is 265.76. 265.76, ठीक है ना? माइनस 100 we can provide up to 165.76. देखो यहाँ गलत आ रहा था कुछ कैलकुलेशन एरर था, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, सो वंस वी हैव सीन दिस, ये बाकी लोगों को पता चला क्या एरर क्या आ रहा था? यस, दिस इज 165 बेसिस पे जब लिया प्लस कैंट एक्सेस किया था, so this was coming as 141 point something. So naturally this is less than this, so this is going to be my deciding factor, ठीक है ना? 140 मुझे देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन कुछ गलत आ गया था, इसलिए वैल्यू ऐसे आ रही थी। ओके ओके, so once we have calculated actual CD because we have limited our speed, so actual CD हमने निकाला, उस CD के बेसिस पे we calculated L2
देन वी डिसाइडेड कि यहाँ पर मुझे 140 ट्रांजिशन लेंथ चाहिए, यहाँ पर मुझे 90 मीटर की ट्रांजिशन लेंथ चाहिए। नाउ कैलकुलेटिंग शिफ्ट अगर मुझे निकालना, शिफ्ट इज सिंपल, L square by 24 hour. So what we have decided is, we have decided a transition length of 140 meter. This is my desirable transition length. Minimum transition length is 90 meter. So we'll simply go for L square by 24 hour, and my shift is, अगर मैं 140 देता हूँ तो this value comes as 0.933 meter. This value comes as 0.385 meter. So these values can be found. This shift is basically from the circular portion. Equivalent circular curve जो radius 875 का है, and after providing a transition length of 140, so this is going to be my shift. This is from original circular portion of the curve. Okay. Now coming to another typical problem where we have a V equilibrium also. मुझे PC ने बता दिया कि आपके सेक्शन की इक्विलिब्रियम स्पीड इतनी है, मैक्सिमम स्पीड भी कुछ है, गुड्स की स्पीड भी कुछ है, और एक इक्विलिब्रियम स्पीड मुझे बता दिया। So let us see how to solve this problem. So on a broad gauge 600 मीटर का रेडियस आपने लिया है, मैक्सिमम सेक्शन स्पीड इज टेकन एज 110 kmph, book speed of goods train is taken as 50 km/h, and your equilibrium speed is also 80 kmph. So once we have been given an equilibrium speed का मतलब आप इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर देना, इसका मतलब ये है कि आपको कैंट वगैरह सारे इस स्पीड के हिसाब से प्रोवाइड करना है, because this is what has been decided. Your cant has to be provided as per your 80 kmph. Then we will have to check कि बाकी कंडीशन मीट हो रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं मीट हो रहा है तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है. बट फर्स्ट थिंग इज वी विल हैव टू प्रोवाइड कैंट एज पर 80 kmph. सो और इसमें एक और कंडीशन है, डिजाइन द कर्व फॉर लिमिटिंग RCA, RCD एंड I. RCA that is this is 55, this is 55, and this is 1 in 360. These are the limiting values. 55 millimeter per second, 55 millimeter per second, and 1 in 360. So what I know is, मुझे रेडियस मालूम है, मुझे V मैक्सिमम मालूम है, V गुड्स मालूम है, V इक्विलिब्रियम मालूम है, ये सारे वैल्यूज मुझे मालूम है, and these limiting values are known to me. And then I have to design the curve. Design the curve means I have to find the cant, कितना मैं स्पीड परमिट कर सकता हूँ और क्या मेरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन है. दिस इज व्हाट आई रिक्वायर. सो लेट अस सी वन बाय वन स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे पहले. सो आई नो R, आई नो V मैक्सिमम, आई नो V गुड्स, आई नो V इक्विलिब्रियम, एंड we have to design a curve. That means we have to design cant, maximum permissible speed and transition length. ये मुझे निकालना है. Okay. So the steps will be, these are the limiting values जो मुझे मालूम है. Cant efficiency I have taken as 75, group C root लिया हमने. Cant gradient 1 in 360, and these values are 55 millimeter per second. So what will be the steps to be followed? As I mentioned, since we have gone for equilibrium speed, so firstly we will have to calculate my cant required for equilibrium speed. V equilibrium के लिए मेरी cant required क्या है. Once we calculate this cant, we will check कि ये maximum cant जो permitted है उसके beyond तो नहीं जा रहा है, means is it going beyond 165? No. Then this is the cant I am going to provide. Now for this cant I will have to check whether my fastest train which is moving within a limit of cant efficiency, and my goods train which is moving, whether it is moving in a limit of cant axis. इन दोनों के लिमिट में वो मूव कर रही है कि नहीं. Then I'll say okay, my cant is fine. मेरी cant बैलेंस कर रही है, cant axis, cant efficiency जो हमने डिसाइड किया, that is balancing cant axis and cant efficiency. But first we will have to calculate cant, and then we will have to check the maximum permissible speed on the curve. Based on this cant, VPRM is equal to 0.27 square root of RCA plus CD, and we will check कि जो मेरी मैक्सिमम स्पीड हमने परमिट की है वो अलाउ मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं इस कैंट के. ठीक है ना. अगर मैं अलाउ कर पा रहा हूँ, वेल एंड गुड. अगर नहीं अलाउ कर पा रहा हूँ, मीन्स आई विल हैव टू अप्लाई स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू माय फास्टेस्ट ट्रेन व्हिच इज मूविंग इन द सेक्शन. दैट मीन्स इफ दिस वैल्यू, दिस कैंट वाज कैलकुलेटेड फॉर 80 kmph, and if I add CD इसमें क्या होगा, since I am talking of potential, so CD will be maximum CD, which in this case is 75 millimeter. मैं अभी मान के चल रहा हूँ पोटेंशियल निकालने के लिए मैक्सिमम CD में प्रोवाइड करता हूँ, एंड दिस स्पीड कम्स एज ओनली 100 kmph. और मेरे सेक्शन में मैक्सिमम ट्रेन की स्पीड हमने कहा था कि 110 kmph है, मीन्स आई एम गोइंग टू हैव अ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 100 kmph. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. तो स्पीड पोटेंशियल पहले आप कैंट प्रोवाइड करोगे इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए, देन यू विल चेक कि आपकी स्पीड पोटेंशियल आ रही है कि नहीं आ रही है. सो स्टेप 3 विल बी इफ V परमिसिबल जो आ रहा है इज लेस देन V मैक्सिमम. जैसे हमने कहा कि ये 100 आ रहा है and this was 110, means we have to apply a speed restriction of 100 kmph. आपको अप्लाई करना है. अगर ये ज्यादा आ रहा है, means your trains can be permitted at 110 kmph, no SR is required. So पहला स्टेप हो गया checking the speed of your
fastest train का आपने चेक किया. Then you will come to your goods train में can't access within limit आ रहेगी. Goods train में you have provided a cant. This is the cant you provided for equilibrium speed, and you check the cant required for goods, and you will see whether it is within the limit of cant access or not. If cant access is within limit, it is fine. If cant access अगर ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब जो आपने cant provide किया that is not permitted. वो cant आप permit ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि goods के लिए that cant has become more, वो ज़्यादा हो गया. Then you will have to limit the cant. So whatever cant you decided for equilibrium speed, you will have to limit the cant further. उसको cant को थोड़ा कम करना पड़ेगा. कितना कम करोगे ताकि cant access के लिमिट में आ जाए. So once you have decided your cant, अगर cant आपने पहले equilibrium के लिए कुछ decide किया था, दोबारा आप recalculate करोगे for your goods and you will find हो सकता है ये equilibrium से कुछ कम आ जाए. goods के लिए this becomes some other value. So now this becomes your final cant. अगर goods ने इसको restrict कर दिया तो restrict कर दिया. पैसेंजर ट्रेन में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो अपना स्पीड कम करेगा, बट गुड्स आपके स्पीड पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर गुड्स की स्पीड बहुत कम हो. इसीलिए आप देखोगे कई बार क्या होता है कि योर स्पीड ऑन अ पर्टिकुलर कर्व इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ योर गुड्स ट्रेन. गुड्स ट्रेन इज नॉर्मली गाइडिंग योर स्पीड पोटेंशियल. सो इफ यू इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ योर गुड्स ट्रेन, अगर 55 पे कहीं चल रही है उसको आप 65 कर दो या 75 कर दो, यू विल फाइंड यू कैन इंक्रीज द कैंट एंड इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन ऑल्सो. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड विच इज बीइंग प्लान्ड टू इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ द सेक्शन. गुड्स की स्पीड बढ़ाओ तो सेक्शन की स्पीड भी कई बार बढ़ जाएगी, कई लोकेशन पे आपको फायदा होगा उसका. ठीक है ना. सो यू हैव टू रिवाइज योर कैंट अकॉर्डिंगली. So you will again check कि मेरी जो फास्टेस्ट ट्रेन है, since you have reduced the cant, मेरी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो इतने कैंट पे चल पाएगी, इसके लिए कैंट एफिशिएंसी कितना आ रहा है, एंड दे विल चेक. एंड नॉर्मली आप इसमें चेक करोगे कि फास्टेस्ट ट्रेन के लिए आ रहा है, नॉर्मली आपको ओके ही मिलेगा, बट अगर नहीं मिलता है देन यू विल हैव टू अगेन इंपोज द स्पीड रिस्ट्रिक्शन, आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो फाइनली योर वीपीआरएम एंड कैंट हैज बीन डिसाइडेड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हैज बीन डिसाइडेड एंड योर कैंट हैज बीन डिसाइडेड. ठीक है. You will see this example, you will solve this example also, and then you will go for calculating transition length calculation, maximum L1, L2 जो भी values formulas तीन दिए हुए हैं. So you know K, CA, you know VPRM, you know radius, so naturally these things can be calculated, L1, L2, L3. Then minimum is going to be 2/3 of this. So in no case you are going to have transition length less than 2/3 of L1, 2/3 of L2 and half of L3. Once you have done this, then a normal procedure is, since you are providing certain rounding off, जब भी आप decide करते हो आप कई बार rounding off करते हो. Cant normally should be in the multiple of 5, speed should be in the multiple of 5 and length of transition should be in the multiple of 10. So normally ये तीन चीज आप ensure करते हो जब भी आप final values calculate करते हो उसको limit में. Similarly, so once you are limiting these values, it is always advisable. कई बार आप बिल्कुल border case पे होते हो और आपने limit कर दिया, so these RCA and RCD may be crossing your accepted values. So it is always advisable that you check your RCA, RCD and gradient. ये तीन चीज़ आप जरूर लास्ट में चेक कर लिया करो, क्योंकि आपने 2-3 बार राउंडिंग ऑफ किया है कैलकुलेशन में, और राउंडिंग ऑफ की वजह से आप कई बार पाओगे कि आपको लग रहा है कि आपने तो ठीक है वो सारे फैक्टर्स लेकर के किए हैं, पर जब दोबारा रीचेक करोगे तो थोड़े वैल्यू के लिए हो सकता है वो फेल कर रहा हो. So it is always advisable कि आप ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये तीन चीज चेक करो, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग टू चेक, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. एज आई मेंशन, इफ दिस नॉर्मली वन थिंग इज, इफ दिस योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, सो यू हैव डिसाइडेड योर वी, आपने वी डिसाइड कर लिया है. सो टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग दिस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज L by V, आपको ये L by V निकालना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट योर RCA. RCA रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट इज दिस कैंट डिवाइड बाय T. सिमिलरली कर रहा है, सो मे बी यू विल बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई योर वैल्यूज स्लाइटली. तो ये हर समय आप चेक कर लिया करो. सो बेस्ड ऑन दिस देन वी विल फाइनलाइज. सो ये कैलकुलेशन इसमें किया हुआ है, ये फाइनली इसकी रिजल्ट कुछ ऐसे आ रही है जो एग्जांपल मैंने दिया था. पहले आपने कैंट इक्विलिब्रियम के लिए कैलकुलेट किया, दिस वैल्यू कम्स एज 146.78. इक्विलिब्रियम मींस बी इक्विलिब्रियम वाज 80 kmph. सो 80 kmph के लिए आपने कैंट कैलकुलेट किया, एंड दिस इज 146.78 व्हिच इज लेस देन 165. सो कैंट यू टेक इन अ मल्टीपल ऑफ 5, आपने उसको 145 ले लिया. स्टेप 2 इज परमिसिबल स्पीड कितनी आ रही है फॉर दिस कैंट.
This comes as 98.09 kmph. तो आपने इसको 95 kmph मल्टीपल ऑफ 5 लिया. This is the permissible speed. Maximum speed कितनी थी ट्रेन की सेक्शन में? That was 110. So you are not going to permit speed more than 95 kmph क्योंकि आपने कैंट इक्विलिब्रियम के स्पीड से प्रोवाइड किया था. So in this case, VPRM is less than V maximum. It is 95. So you are going to have a speed restriction of 95 kmph. उसके बाद आप कैंट एक्सेस चेक करोगे. कैंट एक्सेस आपने कैंट प्रोवाइड कर रखा, गुड्स के हिसाब से चेक किया. This comes as 87.67 for this speed, even for the cant you have provided. So even this is not meeting the requirement. ये भी नहीं मीट कर रहा है. कितना परमिटेड था? 75 मिलीमीटर परमिटेड था. So you will have to revise this cant of 145. जो cant आपने इक्विलिब्रियम के हिसाब से प्रोवाइड किया, गुड्स के हिसाब से this needs to be revised, and this revised value is going to be, this revised cant is going to be your cant excess, which is maximum permitted is 75 plus cant required for goods, and this comes as 132.3. So normally I am going to provide a cant of say 130 millimeter. मैं 130 का cant provide करूँगा. So 145 का cant, the equilibrium speed cant cannot be provided. So I'll provide a cant of 130, and then I'll again check my VPRM, permissible speed कितनी आ रही है. If I check this, what I find, मेरी permissible speed फिर कम हो गई. CA plus cant deficiency मैंने पूरा ले लिया. It is 90 kmph. So for my revised cant, my speed has further reduced. So पहले वाले में 110 की जगह 95 आया था. Now because of this cant excess limit, this has reduced to 90 kmph, and this is what is happening in your section. आपके एक एक फैक्टर के कारण आपकी स्पीड सेक्शन की घटते रहती है. So this is what you are going to get. So actual CD for this VPRM will now be calculated. अब आपकी velocity 90 kmph होगी. अब और cant आपने 130 दिया है. So actually cant deficiency for your fastest train ये आपको दोबारा calculate करना पड़ेगा, and this will be 13.75 V square by R minus 150, and actual cant deficiency is 55.75 millimeter. ये 75 millimeter नहीं रह गया, ये 55.76 रह गया ये. ठीक है ना. Now for this known cant, final cant, for this cant deficiency and for this speed, so 1, 2 and 3, we are going to find the length of transition. So for this transition length, we are going to find these values. L1 इतनी आ रही है, L2 इतनी आ रही है, और L1 L2 अगर मैं निकालता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है. लेंथ हमने 100 लिया, चेक किया हमने इसको. T इज इक्वल टू, अगर इसको आप टाइम निकालोगे, लेंथ बाय टाइम, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है. दिस बिकम्स 4 सेकंड, एंड RCA रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट बिकम्स कैंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज 32.5, which is fine. Cant deficiency, we know cant deficiency 55.76 divided by 4, it is 13.9. This is also fine, and cant gradient is 130 is the cant divided by 1000 length of the transition. Length of the transition is 100 meter. So this becomes 1 in 770. So this is also fine. So all three values is calculation में ठीक आ रहा है हमारा. So we have designed a new curve. So we have designed a new curve for certain equilibrium speed, and we have decided these as transition length, cant and सारा हमने decide कर लिया. ठीक है ना. So this is the curve detail. Finally I am going to get cant इतना, maximum permissible speed इतनी, and length of transition is going to be this much. So this is first part जो कि आपकी जरूरत की फील्ड में. You are going to design a new curve, and this is how you are going to decide your cant, permissible speed and length of transition. If few datas are known, कि minimum goods की स्पीड कितनी है, maximum passenger की स्पीड कितनी है, रेडियस क्या है, और इक्विलिब्रियम स्पीड किसके लिए आपको डिजाइन करना है. राइट, क्लियर हो रहा है सर? इस केस में इक्विलिब्रियम स्पीड कैंट का तो कोई रोल नहीं था. ना आपने, हाँ, इसमें चूंकि गुड्स की स्पीड आपकी कम होगी, इसलिए इक्विलिब्रियम आपका डिसाइडिंग फैक्टर था, आपका गुड्स डिसाइडिंग फैक्टर हो गया. बिल्कुल आप ठीक है, क्योंकि बट अगर गुड्स डिसाइडिंग नहीं होता, इस केस में इक्विलिब्रियम के हिसाब से आप कैन प्रोवाइड करते हैं. यस यस सर. क्योंकि इस केस में इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि कई बार आपने प्रोवाइड तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से करना चाह रहे हो, बट आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो गुड्स आपको लिमिट कर दे रहा है आपके स्पीड को. ठीक है. Okay, so this was first part when we are designing a new curve. The current situation which you must be encountering is we have an existing curve, and हमें कहा जाता है आपकी speed potential बढ़ाओ आप इस curve की. So we know we have complete detail. We are not designing a new curve. We have all details of existing curve, and then we are planning to increase the speed potential. उस केस में क्या situation arise करती है? Let us see. So first is your speed potential, and let me take an example.
मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जिस्टिंग कर्व दिया हुआ है एंड वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल. क्या क्या ऑप्शन हमारे पास रहता है? फर्स्ट इज फाइंड द स्पीड पोटेंशियल ऑफ अ कर्व. इसका रेडियस 2 डिग्री का कर्व है, कैंट हमने एज्यूम कर लिया 100 एंड आई एम टेकिंग 3 सिचुएशंस. वन इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज 100 मीटर एक केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज 60 मीटर, एक केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज 50 मीटर. ये 3 सिचुएशंस मैं लेता हूँ. 3 सिचुएशन के लिए वी विल सी हाउ दीज सिचुएशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालता है. Other limiting values are CD and CX is 75, RC and RCD is 55 millimeter per second, right? So in this case, and I is 1 in 360. मैं सारी limiting values ले रहा हूँ. इसके लिए I am going to find the speed potential of a curve. So case 1, transition length is adequate. पहला केस मानते हैं कि मेरी transition length sufficient है, काफी लंबी है मेरी transition length. So V maximum, these are the formulas. मैंने क्या किया कि जब मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो वी हैव अ सर्कुलर पोर्शन एंड वी हैव अ ट्रांजिशन पोर्शन. सो वी विल कैलकुलेट द स्पीड पोटेंशियल ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व एंड वी विल आल्सो कैलकुलेट द स्पीड पोटेंशियल व्हिच इज बीइंग लिमिटेड बाय द, क्योंकि इसमें सब मुझे डिजाइन नहीं करो, मुझे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, कैंट मालूम है, सब कुछ मुझे मालूम है. तो वी विल सी कि व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड माय स्पीड पोटेंशियल ऑफ द कर्व. यू विल फाइंड मेनी टाइम्स योर ट्रांजिशन लेंथ इज गोइंग टू restrict the speed potential of your curve and you need to increase the transition length or you have other options also, जो मैं इसमें बताऊंगा. ट्रांजिशन लेंथ इंक्रीज करने का ऑप्शन हम सबको मालूम है, बट इंक्रीजिंग ट्रांजिशन लेंथ, शिफ्टिंग ऑफ कर्व, बट देयर इज अदर ऑप्शन आल्सो जिससे मैं 5-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस. नाउ फॉर सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व माय स्पीड पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 0.27 स्क्वायर रूट ऑफ r CA plus CD. आई नो r, आई नो कैन, और मैंने मैक्सिमम कैन डेफिशिएंसी ले ली, जो इस केस में हमने लिया है. कैन डेफिशिएंसी हमने 75 लिया है. सो फॉर 75 कैन डेफिशिएंसी आई कैलकुलेट द स्पीड पोटेंशियल एंड फाइंड कि सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व के लिए मेरी स्पीड 105 kmph हो रही है. ठीक है ना, ये एग्जैक्टली 105.6542 आ रहा है. तो मैंने कहा कि 105 है. लेट मी कैलकुलेट कि मेरी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन लेंथ कितनी होनी चाहिए. अगर मैं कहूँ कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन प्रोवाइड, मैं इतना ही प्रोवाइड कर सकता हूँ स्पीड, but is my transition length adequate for this or not? है कि नहीं पहले, let me check. So for this let me check my transition length and I calculated this for my limiting case, that is 2/3 of this much, L1, L2 and L3. And what I find is मेरी transition required यहाँ पर 56 है, इसमें 42 है, इसमें 36 है. That means if my transition length is more than 60, I don't have any issue. मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मेरी ट्रांजिशन लेंथ है. ठीक है ना. सो मिनिमम रिक्वायर्ड इज 56, ये तो और भी कम है, तो कम से कम 56 मुझे चाहिए. माय ट्रांजिशन लेंथ फॉर मोर देन 60, नो स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पोज, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट वो मीट कर रहा है. सो माय सर्कुलर कर्व इज गोइंग टू डिसाइड माय स्पीड पोटेंशियल ऑफ द कर्व. सर्कुलर कर्व ही डिसाइड करने वाला है. दैट मीन्स TL रिक्वायर्ड अंडर लिमिटिंग कंडीशन इज 56 मीटर. सो फॉर 2 केसेस जहाँ पर मैंने कहा कि मेरी 100 मीटर ट्रांजिशन लेंथ है और मेरी 60 मीटर ट्रांजिशन लेंथ है, इन दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. माय कर्व विल बी एबल टू रन द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 105 kmph व्हिच इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व. ठीक है ना. इसमें तो कोई इशू नहीं है. इसमें अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो आप सर्कुलर पोर्शन ऑफ कर्व को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. या उसमें कैंट आप चेंज करो या आप जो भी चेंज करो, बट वट एवर चेंज इज रिक्वायर्ड इन द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व. कैन चेंज कर सकते हो, रेडियस चेंज कर सकते हो, दोनों में कुछ भी चेंज कर सकते हो. ठीक है. ओके, बट व्हेन योर ट्रांजिशन लेंथ इज इनएडिक्वेट, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स. व्हाट ट्रांजिशन लेंथ, जैसे हमने थर्ड केस लिया था, योर ट्रांजिशन लेंथ इज ओनली 50 मीटर. सो इफ इट इज ओनली 50 मीटर, इट इज जैसे इको आ रहा है. ये माइक ऑफ कर लो आप लोग. यू वांट टू ब्रेक और शुड आई कंटिन्यू? लगातार बोले यार.